Assalamu alaikum viewers. I hope you all also fine, healthy and wealthy, and I hope you all happy. Today I teach you pair conjunction. In previous video I have taught you the co-conjunction, 7 conjunction I have taught you. Now we have to learn pair conjunction or inshallah in next video we will learn the sub-conjunction. So in pair conjunction also called correlative conjunction. In this conjunction we have 4 conjunction. They are pair mean together, 2 conjunction they are used in a sentence. Both and, neither nor, either or, not only but also. In the first both and, they join two positive ideas, person, place, etc. It used in a positive sentence. It used in a positive sentence and join nouns like, just see, both Qaisar and Kamran are same class student. So you can join noun, verb, adjective, adverb by this conjunction. But remember, both and we use in positive sentence, positive, not in negative. Just see to the another, neither nor. They join two negative ideas, place, person. In first one we join positive, but in this neither and nor we join negative idea, place, person, things such as just see to an example, neither Qazi nor Ali is able to be CR. CR mean class representative. Neither Qazi nor Ali is able. It mean not able. They are not able. You can also, if you want to learn for your help, you can put here not. You can put here not, but it also we use in negative. This sentence is used in negative. You can put here not also, but it also gives negative meaning. You can learn it. It means na Qazi nor Ali, na Ali able to be CR. So it is negative. Just note the verb agrees with second subject. We will put verb as a second subject according to second subject. Whether second subject is singular, so we will be putting singular. If the second subject is plural, so we will be putting plural verb. Just see to the third one, either or. They show choice among or between things. If you gonna choose or you gonna give option to your friend, so you must use this either or. Just see to the example, they will cheat either mobile or microcopy. it's a funny example. Let's suppose if a person want to cheat, so we will give him like choice. The person just he will cheat from mobile or microphone, so it means he will be using one thing, not both of. Let's come to the third one, the fourth one. In fourth one we have here like not only but also. Not only but also. Let's make it short. Not only but also. It is the strong form of both and. It is the stronger form, both and. Just see to the example. He was not only a great blogger but also a great photographer. Great, look, I have told you at the beginning we can use adjective, noun and verb from by this pair conjunction. Great is a adjective and blogger is a noun. Great is a adjective and photographer as a noun. So we can join them. Just see to the another example. Not only Ali but also Muhammad Ilyas is my student. Noun to noun. Just see, Ali is a noun, Muhammad Ilyas is also a noun. So we have add join noun to noun. Let me teach you in Urdu. पेयर कंजंक्शन को जो है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं. हमारे पास 4 कंजंक्शन है, बोथ एंड, आइदर, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो. बोथ एंड जो है हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है. इससे आप वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन प्रोनाउन वगैरह जो है वो ज्वाइन कर सकते हो,
ठीक है। जैसा कि एग्जांपल मैंने दिया है, बोथ कैसर एंड कामरान आर सेम क्लास स्टूडेंट, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। हमारे पास बोथ एंड जो है ये पेयर कंजंक्शन है। देखिए सेकंड वन को देखिए, दे ज्वाइन टू नेगेटिव आइडिया, जो है ये दोनों जो है नेगेटिव में यूज़ होते हैं, ठीक है। वो पहला वाला पॉजिटिव में था, अब ये दूसरा वाला नेगेटिव में यूज़ होता है। दे ज्वाइन टू नेगेटिव आइडिया, पर्सन, प्लेस एंड एटसेट्रा। नाइदर काजी नोर अली इज़ एबल टू बी क्लास रिप्रेजेंटर, सी आर मीन क्लास रिप्रेजेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट, अगर नोट लगाना चाहते हो अपनी आसानी के लिए तो आप लगा सकते हो। बाय द वे ये इसका ये मतलब ही नेगेटिव देता है, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव वो लगाना चाहते हो, नोट जो है वो लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। द वर्ब एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट, वर्ब जो है आपका वर्ब जो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पे अली सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है, ठीक है। अगर प्लूरल वो हमारे पास होता कोई चीज़ तो हम जो है वो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। यहाँ पे तीसरा देखिए, आइदर और दे शो चॉइस अमंग और बिटवीन। ये अगर आपने किसी को चॉइस देना हो तो आपने आइदर और का इस्तेमाल करना है। दे विल चीट आइदर मोबाइल और माइक्रोफोन। लेट्स सपोज अगर आपने किसी को कहना हो कि यार आपने एक चीज़ से चीट करनी है, या तो आपने मोबाइल से करना है या तो आपने माइक्रोकॉपी से चीट करना है, तो आपने ये फनी एग्जांपल है। यू कैन लर्न, यू कैन मेक मोर एग्जांपल फ्रॉम योर साइड और यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट। आइदर और जो है ये चॉइस के लिए यूज़ होता है, किसी को चॉइस देना हो तो आपने यही यूज़ करना है, ठीक है। बाकी हमारे पास रहता है ये नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली बट आल्सो जो है ये हमारे पास नाउन और जो भी आप इससे वो, मगर ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। स्ट्रॉन्गर फॉर्म किस चीज़ का है? बोथ एंड का है, ठीक है। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट ब्लॉगर बट ऑल्सो अ ग्रेट फोटोग्राफर। देखिए एडजेक्टिव, ये ग्रेट एडजेक्टिव है, ब्लॉगर नाउन है। ये ग्रेट जो है एडजेक्टिव है, ब्लॉगर नाउन है। नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन। आप ये देखिए दोनों जो है हमने ज्वाइन कर लिया नॉट ओनली के और बट आल्सो से। नॉट ओनली अली बट ऑल्सो मोहम्मद इलियास इज़ माई स्टूडेंट। दूसरा एग्जाम्पल ये है, देखिए नाउन के साथ जो है वो ज्वाइन हुआ है, ठीक है। इसकी ये पेयर कंजंक्शन की हेल्प से। लेट मी टीच यू इन पश्तो। मुसरा चे दगा कंजंक्शन दी द पेयर कंजंक्शन दे, पेयर कंजंक्शन था कोरिलेटिव कंजंक्शन हुई। मुसरा सलूर कंजंक्शन दी बोथ एंड, नाइदर और, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। बोथ एंड दा चे मुंगा पॉजिटिव दगा की यूज को, पॉजिटिव सेंटेंस की यूज को तकिंदा मैं एग्जांपल वर्क करे दे। बोथ कैसर एंड कामरान आर सेम क्लास स्टूडेंट, दस ये पॉजिटिव दे। नाइदर और नॉर चे दा मुसरा दे कना दा मुंग पर नेगेटिव की यूज को दे। ज्वाइन टू नेगेटिव आइडियाज प्रेजेंट, नेगेटिव आइडियाज पर्सन प्लेस एटसेट्रा एटसेट्रा। दे दा मुंगा नेगेटिव की यूज को ताकि neither Qazi nor Ali is not able to be CR, is not able to be CR. دا چې د نیگیټیو کې مونږ یوز کړی دی دلته کې وګوره دا دوه قابل نه دي چې دا د کلاس ریپرزینټر شي، صحیح ده. ایدر اور چې دا مونږ چوایس د پاره یوز کوو، لکه چاله چوایس ورکې نو هغه ته به چې دا ایدر اور چې یوز کوې، لکه چې اوس تا ته یم you should bring either sweet or chocolates for either candies or chocolate for the students. دلته کې چوایس شو یا به چاکلیټ وروړي یا به کینډي وروړي، صحیح ده. نو دلته کې دا چوایس د پاره یوز کیږي. دا بل چې کوم نوٹ اونلی بټ آلسو دا چې دا دام لکه بوت اینڈ په شانتي خو د هغې سټرانګ فارم دی، لکه چې په سخته چاته وي نو دا یوز کولی شي، صحیح ده. دا دلته کې دا اگزامپل ورکړی دی. he was not only a great blogger but he also a great photographer. دلته کې ګوره adjective او noun adjective او noun دا په دې هیلپ سره چې جوین شوي دي پیر کنجنکشن هیلپ سره. not only Ali but also Muhammad Ilyas is my student. علیم صرف علی نه، محمد الیاس هم چې زما سټوډنټ دی، صحیح ده. او چې دی معنی لرنینګ کوي، نو دلته کې ناون سره چې دی دغه شوی دی. I hope you have learned it. Please practice and tell me in comment how much you have learned, and like, comment, and please subscribe the channel. I'll making more videos, learnable videos, and stay tuned with me. I'll catch you next video. Allah Hafiz.